Hi everyone. I hope everyone is doing well. Welcome to my channel Keys of Brain. जनरली इंट्रोडक्शन मेरा बेटा देता है बट यस मम्मा को भी चांस मिलना चाहिए. ये चैनल हमने जो क्रिएट किया था द पर्पस वॉज आई रियली वांट टू शेयर माई सन्स जर्नी विथ हिज एजुकेशन सो डैट कि बाकी बहुत सारी मदर्स को ये एक हेल्प मिले हाउ टू स्टार्ट. आई एम ऑल्सो लर्निंग. So we just go ahead step by step. तो वी स्टार्टेड विद द फोनिक्स. ये सारे एक वीडियोस का रीकैप होगा जिसमें मैं आपको इन ब्रीफ थोड़ा सा बताना चाहूँगी हाउ टू रीच दैट पर्टिकुलर लेवल इन द फोनिक्स. सो लेट्स सी what happened further. We start our video. We have started with the first phase of phonics in which we already covered the 8 steps. जो हमने इसके टीचर्स की हेल्प के साथ मैंने उसको 8 स्टेप्स में डिवाइड किए सो दैट आई कैन टीच हिम प्रॉपरली. सारे इंडिविजुअल वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है मेरे चैनल पे. इन डिटेल यू कैन चेक इट आउट. आई जस्ट शेयर द लिंक इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ फोनिक्स. फोनिक्स होता क्या है? Phonics is just a simple method in which we can teach our kids how to read and write by study the sound of the individual alphabets. It's just the sound recognition. हर अल्फ़ाबेट की अपनी एक साउंड होती है, वो साउंड हमें सीखनी है. That's it. It's all about the phonics. First step is recognition of capital letters. You have to make the bright and colorful flashcards of capital letters ABC till Z and make sure daily you have to repeat and revise the letters. जब तक बच्चे को रिकोगनाइज नहीं होता कि C कैसे लगता है, D कैसे लगता है, एंड यू कैन कीप ऑन आस्किंग. इट्स अ डेली बेस्ड एक्टिविटी. सो बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड जिससे कि आपको विदाउट लैगिंग आपको डेली उसके साथ बैठ के यू हैव टू स्पेंड 10-15 मिनट्स एंड कीप ऑन रिवाइजिंग कि हाउ ए लुक्स, हाउ बी लुक्स, हाउ सी लुक्स. देन यू हैव टू आस्क हिम विच लेटर इज दिस. ही इज़ गोइंग टू टेल यू कि ममा दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. Now move to the second step. Second step is the sound of alphabets. When he is thorough with the alphabets recognition, next step is that you make again the flashcards now with the pictures on it. Suppose we have the A alphabet. Now we have to paste the picture related with the A, like apple, axe, and with each and every letter you have to tell them the sound. Starting with suppose A, tell them okay, this is the letter A. How and what's the sound of A? It's A. And relate the vocabulary. A, apple. A, axe. A, aeroplane. Like this. In the same way, you have to teach the individual sound of each and every alphabet. And again, you have to make it regular practice. It's not just one day you are just sitting. Moving further, we have the third and the fourth step together, song and action. Now our next step कि बच्चों को song and action सिखाई जाए and they can learn very well. हर individual alphabet के साथ we have a related jolly phonic song and action. Suppose starting with the A again, sound is A and the song is A, ants on my arm. So that action of ants on my arm, you can check so many apps, you can check. Keep on repeating the action so that he can make out from your action that this song belongs to which alphabet. And in case अगर जैसे उसे आप कभी भी एक्शन करो तो he can easily make out कि ममा कौन सा एक्शन कर रही है. This is a so and so alphabet. So this is a very important step
song with an action, and really the kids enjoyed very well. मैंने अपने बेटे के साथ एक्सपीरियंस किया. He really loved the song. He loved the song and he loved to do the Jollyphonics action. Next step is recognition of small letters. It means if the child is done with the recognition of alphabets, songs, action, everything, meanwhile please introduce to recognize the small alphabets also. Because going forward जैसे जैसे हम वर्ड्स पढ़ना सीखते हैं आगे तो फॉर्मेशन सीखते हैं फोनिक्स से ऑल द थिंग्स रिटन इन द स्मॉल लेटर्स सो द चिल्ड्रन शुड नो दैट कि ये स्मॉल लेटर्स है दिस इज़ द कैपिटल लेटर अगेन विद द फ्लैश कार्ड्स ओनली कीप ऑन राइटिंग द अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स एंड उसी के साथ में आप स्मॉल लेटर्स भी लिखिए सो दैट ही कैन मेक आउट कि ये स्मॉल लेटर्स कैसे लिखते हैं. तो दिस इज़ द क्रूशियल स्टेप फॉर द word formation and the reading. Next step is to start with the vowels. Vowels में हम बच्चों को start करते हैं with the vowel hand so that each and every finger has a specific vowel sound. Generally we start करते हैं short vowel sound से so that you can see that hand अलग अलग fingers में अलग अलग dedicated vowel alphabet is mentioned. So we have the Jollyphonics song also on the vowels, which really the kids enjoyed a lot. Starting with that, the kids started learning eh, e, o, e, o, It means we are starting with the short vowel sound. This is a sound of short vowels, so that kids will enjoy the vowel hand formation. This is the next step to teach the kids. Short vowel sound e, e, o, e, e, o. How to recognize the short vowel? जब भी हमें recognize करना है short vowel, there is a arc, curved line above the vowel. It means कि हमें उसे short vowel की तरह ही read करना है. Till now, the kid is thorough with the capital letters recognition, sound of each and every individual letter, the song and action for each and every individual letter related to that, recognition of the small letters alphabets, introduction of the vowel hand. Now we start with the short vowel. Short vowels starting with the A, E, I, O, U and their Jollyphonic song for the vowels which sounds like e, o. So this is the next step which we have to keep on revising. Now this is the last step, introduction to the word families. Word families होता है क्या? It's just the same pattern of the sounds and the words combined together. It's called the word families. जब बच्चों को समझ आ जाता है short vowel sound कैसे है, now individually we are going to create the family of these words, starting with A, then E, then I, then O, then U. Here I attach the screenshot for a reference, and further also I attached individual link of my video related to all that 8 steps in the comment section. You can check it out. Now this is the end of 8 steps. Going further हम साइड फूड से स्टार्ट करेंगे, then reading will come. So in between मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस के कुछ फेज के बाद keep on briefing you और recap all the concepts. I hope मैं कुछ मदर्स की इसके थ्रू हेल्प कर पाऊँगी so that they also start their kids journey. Now it's time to signing off. I hope I did the justice. I'm not a professional teacher, though मैंने एफर्ट्स किए अपने बेटे को सिखाने के लिए so that बाकी भी मदर्स की हेल्प हो अपने बच्चों को सिखाने के लिए. It's just a small effort. Going forward, I keep on making the videos so that मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकें हम मिलके एक दूसरे के साथ.
Thank you for your patience listening me, and yes, thanks a lot for appreciating our efforts. Thanks a lot. Take care. Bye.